Hi, good morning. This is Dr. Neha again, and today we'll be dealing with the practical peripheral blood smear and differential leukocyte count. One of you just let me know on WhatsApp Physiology MBBS wale group pe if I'm audible and whether the screen is visible to you all or not. Just 1 to 2 replies, please. Okay, thank you so much. We'll be starting in another 5 minutes. Let the students join in. It's 9:57. I'll be starting around maybe 10:03 or 10:04. Good morning, ma'am. Ma'am, am I audible? Haan, beta, you're audible. Ma'am, there was something that I wanted to ask you. I've seen that this is going around for plasma donation. People who have been vaccinated are not eligible for plasma donation. They can only donate blood. I wanted to ask, why is it important for a person to be infected to donate plasma? And why not a person who's vaccinated? Yeah, I'll tell you why. Because plasma donation ka sole purpose is to transfer antibodies to the infected patient, so that he recovers fast. If at all you have studied blood, so immunity may we always say that there need to be an antigen present against which the antibodies are formed. So supposedly, God forbid, if I'm COVID positive as of now, okay, so antigen is inside me, na COVID antigen hai. So my body is fighting against it and generating the antibodies against it. Okay, hai na? Yes, ma'am. On the contrary, if I'm COVID negative, that means the infection has not been inside me yet, right? So what I'm supposedly given is COVID की antibodies जो हम vaccination के form में ले रहे हैं, है ना? हम वैक्सीन में एंटीबॉडीज दे रहे हैं या एंटीजेन ले रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है। एंटीजेन दे रहे हैं बेटा, एंटीजेन दे रहे हैं, whether the killed virus or the वो, but the body, हमारा vaccination का the main principle underlying any vaccination is that you're given antigen in very small doses, against which the body generates an immune response and antibodies are formed against it. All right. तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली कोविड पॉजिटिव पेशेंट थी तो मेरी बॉडी बना रही है, और इफ आई एम नॉट एक्सपोज टू कोविड इन्फेक्शन येट, so I'm being given vaccination wherein antigen is given in very low doses. Okay, so against which the antibodies will be formed, and only then I'll be able to generate antibodies. And the sole purpose for plasma donation is कि जो लोग COVID infected हैं, so as to take over the COVID antigen control rapidly, I need to donate them antibodies as soon as possible. उनमें क्या होगा, अभी तो COVID infection चल रहा है, there's an ongoing infection in that infected patients, so it takes time for them to generate antibodies. Wherein, on the contrary, me as a patient, अगर मैं vaccinated हूँ या I have been already COVID positive, I have lots of antibodies already, है ना? Although vaccination के आप immediately बाद नहीं कहते हो कि आप आपने आज vaccine करवाया हो और कल आप donation के लिए ready हो, not that. Okay, so you take good 15 to 20 days or so. And second most important thing is, see, it's a blood donation thing. Supposingly I am going for blood donation or plasma donation today, okay, I don't know my status whether I'm COVID positive or negative, and straight away go कि नहीं मुझे तो अभी तक infection हुआ नहीं है and neither I'm symptomatic, so let me go and donate plasma, है ना? The sole purpose will be lost without the vaccination, because you never know कि पता लगे आप ही के अंदर COVID antigen and you're more infecting the patient altogether. Am I clear? Okay. Did you get it? तो फिर yes ma'am, I got it, but if अगर किसी को वैक्सीन लग गई है and अच्छा खासा स्पैन हो गया है, 1 month हो गया है, तो तब वो डोनेट कर सकता है प्लाज्मा? हाँ, we always say कि vaccination के बाद 28 days या कुछ हमें दिन क्यों चाहिए होते हैं, because it takes time for the antibodies to develop inside the body against that particular antigen we have been infected with. Okay, antibody response takes some time. तो full blown response हमें plasma donation हम क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि किसी infected patients को antibodies मिल जाए. मैं 10 दिन में कर दूंगी तो I won't have a good antibody response to my own self. So how would I be able to donate to others? All right. तो इसलिए we preferably say कि vaccination के कम से कम 20-28 days बाद you're eligible for vaccination, for the plasma donation. Okay, ma'am. Thank you. Yes, okay. Ryan, you are not able to see the screen, beta. Might be the internet connection problem from your side, because I assume everybody is able to hear and see the screen otherwise. Please check your internet connection, beta.
Okay, Soumya is also not able to see the screen. Let me check. Maybe there's a connectivity issue from my side. Just a moment, guys. Okay, thank you. So it's 10:02. I'll wait for another 2 minutes or so. It's already 187 students as of now. So let me wait for another 2 minutes and we're good to go with. I'm just hurrying up since you have a lecture again from 11 o'clock, 11:15, I presume. So I'm trying कि 11 बजे तक मेरा खत्म हो जाए so that you get a 10 minutes break in between. So that is why I was in a hurry so that you join fast exactly at 10. Okay. So once I start the briefing, the golden rule would be whatsoever doubts you have for today, please let me complete the briefing. Note down your doubts on a pen with a pen and a paper, and I'll be taking up the doubts as soon as I finish off my briefing. Otherwise, it's very distracting कि मैं बीच में ना फिर उसमें doubts लेने लग जाता हूँ, तो I lose time. All right. So let me finish my briefing today. Do not WhatsApp me in between. It's very distracting to me. Personally, I don't know about the others. So I'll take up the doubts, each and every doubt at the end of the session for sure. All right. Okay, so let me start, please. So today our practical is on peripheral blood smear, how to make a peripheral blood smear and how to get a differential leukocyte count. All right. So the objectives for today would be, first of all, to learn the procedure. Procedure mein, we need to learn the preparation of a peripheral blood smear. Once we have made a peripheral smear, how to stain it, thereby to how to examine it, how to identify and count the cells, that is perform a differential leukocyte count, and the way of recording and expression of the counts. Also, we need to study the pathological variations in DLC. Okay. Yeah. Yeah, so our aim is to make a peripheral blood smear and to count the different types of leukocytes present in a stained blood smear and express their relative counts in percentage. हमें एक peripheral smear बनाना है जिसमें कि पहले हम करते हैं total WBC count. That is irrespective of कि वो neutrophil है, basophil है, eosinophil है. We count all the WBCs and make a total WBC count. Whereas today we'll be counting the different type of WBCs individually. Neutrophils kitne, basophils kitne, so on and so forth, in that stained peripheral blood smear, and thereby express those different WBCs in their relative counts as percentages. Okay. So what is a DLC? A DLC is a relative proportion of different WBCs expressed as percentages, as mean how much percentage of neutrophils, how much percentage of eosinophils, so on and so forth. Now, first of all, what do we mean by a blood film or a peripheral blood smear? So it is a thin layer of blood smeared on a glass slide and then stained in such a way so as to allow the various blood cells to be examined microscopically. Peripheral blood smear means कि एक thin layer of blood को हम smear करते हैं एक slide के ऊपर, उसको different stain से stain करते हैं so as to we are able to see microscopically those different type of blood cells. Okay. Now, what is the role of peripheral blood examination? Why do we do so? We need to do so for the evaluation of anemia, for the differential leukocyte count, for identification of abnormal cells,
infections like malaria and microfilaria की identification के लिए. The simple funda being, if I am able to see all the cells present in blood, that is RBCs, WBCs, platelets, any abnormal cells or any blood parasites, जो कि blood cells के ऊपर होते हैं parasitic. So if I'm able to stain a smear and see all these type of cells, so I'll be able to evaluate all the characteristics of different types of cells. For example, अगर मैं RBCs देख सकती हूँ, so I'm able to evaluate anemia. I can perform a differential leukocyte count, as I just said. I can also see what is not mentioned here is platelets. Whether the platelets seem normal in number. We cannot count platelets on DLC, but we can just evaluate whether the platelets seem normal in number or whether they are normal in shape or not. So the platelets are not mentioned here. It is also the same. Then we can identify any abnormal cells present there in the smear. For example, अगर leukemia है तो blast cells हो सकते हैं, immature cells हो सकते हैं, so on and so forth. And some parasites which reside inside the RBCs, for example, malaria or microfilaria, we can identify those infections on a peripheral blood smear examination. All right. So for the preparation of the blood smear, we need either the anticoagulated blood. Anticoagulated blood मतलब कि एक vial में already anticoagulant present है और उसमें आप blood mix कर रहे हो. Yeah, the most common thing you do yourself in the labs, in the physiology practical labs, is you make a smear from your own blood. That is, blood smears can be made from finger prick directly onto the slide. आपने अपनी finger पे finger prick लिया, blood को, first drop of blood को always and always has to be wiped off. तो first drop of blood आपने discard किया, and second drop of blood में make a good size drop, that is a medium size drop onto your finger and directly apply it or smear it onto the slide. Slide के ऊपर ये छोटी सी drop को आप एक जगह पे ले लोगे. I'll show you how in the upcoming slides. Okay. So the materials required are your own blood, number 1, 4 to 5 clean glass slides, not 1 but 4 to 5. All right. Clean glass slides. Then there's a glass slide which is referred to as spreader by your own self. We need a spreader. Spreader means a glass slide with a smooth edge. किसी भी slide की 4 edges होती हैं, है ना, और क्योंकि वो thick होती है तो it makes a total of 8. As in कि एक front view में 4 edges होंगे और एक back view में 4 edges होंगी. Consider it as a cuboid, है ना. Glass slide is a very thin cuboid, so it has 8 edges altogether. So we need to select by finger के touch से or by looking at it, select an edge which is very smooth, which do not have serrations, क्योंकि glass है, slides का edges कभी-कभी serrated होती हैं या irregular होती हैं. We need to choose a one slide from the slide box so as कि एक slide, उस slide की एक edge को हम, जिसकी बहुत smooth edge हो, we choose that glass slide with the smooth edge as our spreader. So 4 से 5 slides हमें अलग से चाहिए, and we need to choose a glass slide which can act as a spreader for us. I'll show you why. So here we come on directly to the procedure. See, what I said is you collect the blood drop onto the slide. आपने अपनी finger को prick किया, obviously under aseptic precautions. You wipe off the first drop of blood and then make a second drop of a medium size onto your finger, और आपने उसको यहाँ पे एक glass slide के ऊपर ले लिया. This is glass slide number 1. Okay. As I said, ये जो tick mark कर रही हूँ मैं, this is what I called it as a spreader. We chose a spreader, we chose a glass slide which has a smooth edge. Probably इन्होंने finger से अपनी या देख के और finger से दोनों से feel करके देखा कि this has a very smooth edge. So we choose this edge as a spreader. ठीक है? Now, what do we mean by spreader? Just look नीचे. We need to place a drop of blood towards the end of slide. ये एक slide लिया बेटा, ठीक है? उसके एक end पे, बिल्कुल कोने पे नहीं, somewhere like थोड़ा सा अंदर की तरफ में, we place this blood drop जो हमारी finger पे हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है? DLC में peripheral smear में सारा खेल is about making a good smear. All right? अभी as of now, what I'm telling you, I'm reinforcing is I'm telling you how to make a blood smear, how to make a peripheral blood smear on a slide. All right? हमें करना क्या होता है? हमें एक slide लिया, उस पे blood drop लिया, दूसरे slide को हमने अपने हाथों से finger से पकड़ा हुआ है. From your index and your thumb, from your index finger and your thumb, hold it in a pen holding position such that the spreader makes an angle of
the spreader makes an angle of about 45 degree. ठीक है? I'm trying to write down. All right. Yeah. So take the blood drop onto the glass slide. Hold the spreader in a pen holding position from your thumb and your index finger such that the spreader forms an angle of 45 degrees with the नीचे वाली slide. Okay. Now what you need to do is, ये spreader हमने, अगर आपने देखा हो, ये blood drop से आगे रखा हुआ है इस टाइम पे, यहाँ पे रखा हुआ है ना. And there's an arrow here which says कि इस spreader को आपने पहले आगे रखना है, and you just need to bring the spreader back such that it just touches the blood drop. It just touches the blood drop. Once it touches the blood drop, come on to this figure. The blood will be spread laterally. क्योंकि glass edge है तो capillary action से जब आप इस spreader को आगे से पीछे लाएंगे, the blood drop का जो blood है that will be spreaded laterally onto this spreader. ठीक है? Once the blood spreads laterally onto the spreader, then you move forward to make a smear. Just read carefully and I'll proceed again. I'll show you the further slides. So it says that place a drop of blood towards the end of a slide on a flat surface, obviously means on a glass slide. Then reverse the spreader slide into the drop of blood. Our purpose is, एक मिनट बेटा. Our purpose is कि blood drop को पहले spreader पे हमने blood को लेना है इसको, and then हम आगे की तरफ तभी तो smear बना पाएंगे किसी चीज पे जब हम blood drop लेंगे, लेकिन blood drop का spreader पे spread होना पहले जरूरी है. ठीक है? So आप सबसे पहले spreader को आगे रखते हो, then you take the spreader back such that it just touches the blood drop. Once it touches the blood drop, the blood will spread laterally edge to edge. जब तक वो पूरी स्लाइड की पूरी विड्थ को कवर नहीं कर लेता है तब तक do not move your spreader. Okay? As you can see, the whole blood drop is consumed. है ना? सारा का सारा blood spreader पे आ गया है. Once the blood drop spreads laterally onto the spreader such that the whole width of the slide is covered. पूरा spreader के पूरे edge पे. Obviously the width of the spreader will be equal to width of the slide ना. तो जब तक वो पूरा blood इस spreader पे नहीं आ जाता तब तक आप इसको यहाँ रखेंगे, and then you move the spreader forward in one go without hesitation. So once the slide is in contact, I'm reading here, once the slide is in contact with the blood, pause the movement of the slide to allow the blood to spread laterally. Okay? Then propel, that is move the spreader slide forward with a gentle smooth motion to spread the blood along the slide. We'll get something like this. See again. मैंने बोला 30 से 45 डिग्री के एंगल पे आपने स्प्रेडर को रखना है. ये ग्लास स्लाइड आपने टेबल पे रखी हुई है. This slide is not in हवा. This is on a table. जो आपके वर्किंग टेबल्स होते हैं, आपने उस टेबल पे अपनी ये फ्लैट वाली ग्लास स्लाइड को रखा, एक स्प्रेडर चूज किया. स्प्रेडर चूज करके you place the spreader at an angle of 45 degrees. You bring the spreader back such that the blood spreads laterally onto the spreader. Once the blood spreads laterally onto the spreader, then you move the spreader forwards such that this whole smear is formed. तो smear जो आपका बनेगा वो आपका ऐसा कुछ smear बनेगा. ये आपका वो edge था जहां पे आपका blood drop आपने spread किया था. ठीक है? यहाँ से आपने move forward किया, so something like this is formed. Now something like this is formed is जब आप किसी viscous fluid को आगे की तरफ move करोगे तो transitions होंगे ना, पहले ज्यादा dense, फिर कम dense और फिर बिल्कुल dense, फिर कम dense और फिर सबसे कम dense, है ना? So a thin feathered edge is formed. A tongue-shaped smear is formed. A tongue-shaped smear is formed. Edge to edge बनता है बेटा. This figure shows you wrongly क्योंकि हमने blood को पूरा इधर से इधर spread किया था, तो आप ये मान के चलें. I'm trying to make you explain the things without the practical. It might be a little. See, तो आपका जब smear बनेगा ideally, it will be something like this. ये जितना भी shaded part है, this whole will be your smear. आपने यहाँ से blood को आगे की तरफ move forward करना शुरू किया था. Okay? So this whole thing comes as a smear. Details exactly being what is shown in this image. ऐसा ही smear बनता है. शुरू में ज्यादा dense,
once you move a viscous fluid, तो शुरू में थोड़ा ज्यादा डार्क होगा, डेंसिटी फिर कम होगा, फिर फ्लूइड थोड़ा सा रह जाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइटर एंड लाइटर. ओके, सो यू गेट अ टेल्ड टंग शेप्ड एज, फेदर्ड टंग शेप्ड स्मेयर बनता है. ठीक है. Now, as I said, this figure is showing you wrongly because the smear has to be width, पूरा width, slide का width cover होना चाहिए, and it has to be made such a way. आप smear छोटा बड़ा कुछ भी बना सकते हो ना, आप कहो कि मैम मैं इतना से ही मूव करके छोड़ दूं. The smear can be made, आप कितना मूव करोगे, इतना मूव करना है, आगे इतना मूव करना है, या पूरा smear मूव करना है पूरा आगे, या मैं पूरा स्लाइड के आगे तक ले जाऊं. No, the ideal characteristics are that it should cover whole of the width of the slide and at least 2/3 of the length of the slide. ठीक है. So the length has to be at least 2/3 of the whole length of the slide, and the width has to be edge to edge. I hope I'm clear. In case not, just note down your doubts. I'll take up your doubts later on. So as I said, ये transitions में बन रहा है ना, मैंने बोला इधर कम, इधर ज्यादा dense होता है, फिर कम dense होता है, फिर बिल्कुल हल्का सा होता है, because blood volume is lesser and lesser as we move the smear forwards. So एक transitional smear बनता है. Okay, and this was the place जहां से आपने blood लेना शुरू किया. So this is called as the head end. This blood drop जहां पे आपने लेना शुरू किया था, and here this blood drop जहां पे आपने लेना शुरू किया था, this is called the head end. The center portion is called the body, and the tongue shaped part जो last में tongue shaped part पड़ रहा है, that is called the tail of the smear. Something like this. See, this is the head जहां पे आपका actually blood drop था और जिस पर आपने spreader पे smear कर लिया था. ठीक है. This is the body. This is the body, and जो last में tongue shaped part बचता है आपका lighter in color, this is the tail of the body, tail of the smear. Okay. So what are the characteristics of a good smear? You are being asked very frequently in your practical vivas. A good smear is tongue shaped at the tail end, okay, with a smooth tail. But a smooth tail banti hai. It cannot be, I'll show you what are the abnormal smears. So it has to have a smooth edge. The tail end has to have a smooth edge, okay. So characteristics of a good smear are, the good smear is tongue shaped with a smooth tail. It does not cover the entire area of the slide. As I said, अगर ये पूरी slide है, it does not cover the entire area like this. ऐसे नहीं बनाना है. We just need to cover the 2/3 of the length of the slide, and it has to be edge to edge. So the good smear should be tongue shaped. It does not cover the entire area of the slide. Rather, it covers at least 2/3 of the length of the slide, and it has to cover the whole of the width of the slide. Okay. It has both thick and thin areas with gradual transition. As I said, it has both thick and thin areas with gradual transition. Okay. And it does not contain any lines or any holes. बीच में कोई गोले या कोई lines वाइन्स नहीं होती हैं. I'll show you how. See, so this is a well-made peripheral blood smear. If you see carefully, अगर ये length पूरी है, so it is almost 2/3 of the length. The smear is almost 2/3 of the length of the slide. And as I said, यहाँ पे images में गलत दिया हुआ है. It has to cover whole of the width of the slide. पूरी width पे आना चाहिए. ये white part नहीं रहेगा. ठीक है. अब abnormal smears या जो unacceptable smears होते हैं वो कौन से होते हैं? See carefully. Figure A. This shows you chipped or rough edge. अगर spreader का edge खराब होगा, अगर spreader का edge smooth नहीं होगा, तो serrations दिखेंगे. ये chipped और rough edge दिखेगा. Number 1. Number B. As I said, you have to move your spreader forward for making a smear in one go. Very smoothly and gently. आपने blood drop पे touch किया, blood को laterally spread होने दिया, and you move your smear you move your spreader very gently and smoothly, but in one go. अगर आप रुक के आपका हाथ बीच में कहीं पे भी रुकेगा, so you will get hesitation marks. Hesitation marks मतलब आपका हाथ यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे एक serration आ जाएगा, यहाँ पे रुकेगा फिर आ जाएगा, रुक के चलेगा हाथ, उतनी बार वहां पे lines आ जाएंगी. We do not want that. This smear is not acceptable. Okay. Number 3, the spreader is pushed too very quickly. बहुत ज्यादा जल्दी push करोगे तो सारा ब्लड यहीं पे शुरू में एकदम से स्मेयर बना देगा. We do not want that as well.
or the drop of blood is too very small. I said कि medium size drop बनाना है आपको अपनी finger पे. अगर आप जैसी blood ooze out होगा और वैसे आप touch कर दो glass slide पे, the blood will be so small कि वो चाह के भी बहुत अच्छा सा smear नहीं बना पाएगा. It will be a very small smear, and we would not be able to scan it properly. So this is also not acceptable. Okay. Then E. The drop of blood is not allowed to spread laterally across the width of the slide. As I said, जब आपने spreader को पीछे blood drop पे लाए, allow the blood to spread laterally onto the whole width of the spreader. अगर ऐसा नहीं करोगे और जैसे ब्लड को टच किया वैसे मूव करोगे तो इतना पतला सा स्मेयर दिखाई देगा, which is also again not acceptable. Reason being, मैंने बोला width to width होना चाहिए पूरा स्मेयर. Okay. Then F. C. The most important precaution whenever you make a peripheral smear on a glass slide is always and always wash your slides with soap and water. क्योंकि जब slides manufacture होके आती हैं तो it has some kind of oil or grease over it. किसी भी oily or greasy surface पे आप कुछ चलाने की कोशिश करोगे, it is very obvious कि उसमें vacuoles आ जाएंगे, है ना, उसमें छोटे-छोटे holes आ जाएंगे. Once holes are there, it is not a good smear. We do not accept that as well. Okay. अगर uneven pressure on the slide लगेगा, आपने blood drop को एकदम से तो बड़े smoothly इकट्ठे manage करा और कहीं पे तेज, कहीं किसी side पे ज्यादा pressure लगा दिया, किसी side पे कम, again it will be an uneven smear. Tail will be uneven. We do not want that. We want a perfect tongue shaped tail as far as possible. Okay. और last but not the least, आपने ब्लड ड्रॉप को ग्लास स्लाइड पे तो ले लिया, बट आपने इमीडिएटली स्मेयर नहीं किया. यू से कि अभी 1-2 मिनट बाद बनाता हूं. व्हाट वुड हैपन इज एज सून एज द ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द ग्लास स्लाइड, द ब्लड विल स्टार्ट क्लॉटिंग. Clotted blood will not move smoothly. Okay, it won't move smoothly. So again, it is not a good smear. So the ideal smear has to be 2/3 of the length. It has to be width to width. It has a smooth tail end such that it has no serrations, no vacuoles, no lines. All right. So this is the shape of a blood film. As I said, this is the head end, जहां पे आपका blood का drop था. This is your body, and as I said, smear जो बनता है transitions में बनता है. See, appreciate, ये dark purple है, ये उससे थोड़ा सा light red होगा. I would say ये आपको image में इसलिए purple दिखा रखा है, so that you're able to appreciate it nicely. Okay. Sorry for the interruption. So it has to be a gradual transition. So if the blood would be red in color, so यहाँ पे dark red होगा, lighter red, and then light red, and then very light red. Okay. So the head, body, and the tail. So as you can see, at the head and the body end, the film will be too thick. The smear will be too thick, है ना? At the tail end, that is बिल्कुल at the end, the film will be too thin, है ना? So we need an area of ideal thickness which is in between these two. This is the ideal thickness area we need to study. बिल्कुल tail end पे नहीं, बिल्कुल body end पे नहीं, somewhere in between. ठीक है? And you're able to appreciate it once you look into the microscope. ये ऐसे ही देख के पता नहीं चलता है, ये माइक्रोस्कोप पे जब आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप पे पता चल जाएगा. Okay? Normally we say that the neutrophils are mostly found at the tail end, towards the tail end. जो heavy WBCs होते हैं, that is the lymphocytes and the monocytes, they are found towards the edges. Okay. Tail end पे neutrophils मिलते हैं normally, edge end पे normally edges पे lymphocytes और monocytes मिलते हैं. See, these are the normal blood films जो हमने यहाँ पे देखी थी. ये stained smears हैं. हम peripheral blood smear की बात कर रहे हैं अभी. ये वो smears हैं जो already DLC करके निकल चुके हैं. Stained smears हैं. So as you can see, इसमें lines आ रही हैं. Although this one is the closest to an ideal smear, क्योंकि ये tongue shaped है, 2/3 of the length cover कर रहा है. अगर ये length मान के चल रही हूँ मैं. Okay. It has serrated ends. देखो, smooth edge नहीं है. It has holes in it. इसमें hesitation marks हैं. That is आपका हाथ रुक के चल रहा है. इसमें D में आपने blood drop को edge to edge spread होने के लिए allow ही नहीं किया. उससे पहले ही आपने smear बना दिया, है ना? And see the tongue, कहाँ तक अजीब सी जा रही है ना? Again, the slide was not washed properly, so it has lot of oil and greasiness over it, so full of vacuoles. Slide number E. So these are the normal blood films we do not want. Now, as I said,
The smear need not to be very thick, neither it has to be very thin. अगर आप ये सोचो स्मार्टली कि मैं थोड़ी सी ब्लड ड्रॉप लेकर उसको आगे तक स्प्रेड कर दूं, नहीं, इट वुड बी वेरी थिन, क्योंकि जब आप उसकी स्टेनिंग करने लगोगे तो स्टेन में वो सारा ब्लड वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि द स्मेयर वुड बी वेरी थिन. ओके, so the thickness of the smear is determined by the angle of the spreader slide. Basically the take home message is that it has to be roughly at an angle of 45 degree or so. Okay, it has to be a good size blood drop, it has to be a medium size drop, it has to be a medium size drop. The spreader has to be at an angle of 45 degrees, and the speed of spreading has to be such that it has to be neither too slow, neither too fast. It has to be at a gentle speed such that your hand moves in one go forwards, and it has to be smooth and gentle. रुक रुक के नहीं बनाना है, एक ही बार में आगे तक लेके जाना है. The common causes of poor blood smear are the drop of blood, as I said, would be too large. अगर ज्यादा बड़ी ड्रॉप होगी तो थिक स्मेयर बनेगा, कम ड्रॉप होगी तो या तो स्मेयर ही नहीं बनेगा अच्छे से, और बनेगा तो बहुत थिन बनेगा. ठीक है. Secondly, either the spreader slide is pushed across the slide in a jerky manner. Okay. Thirdly, the failure to keep the slide at an angle of, as I said, 30 degrees नहीं, 40 to 45 degrees आप बोल सकते हैं. Failure to push the spreader slide completely across the slide. The edge of the spreader, as I said, is dirty or chipped. There can be holes in the film, which can be due to improper washing of the slide, or you did not wash the slide beforehand. So the slide would be contaminated with fat or grease or the air bubbles. Or the cellular degenerative changes because of delay in fixing. Inadequate fixation time or methanol need not worry about that. The thing is कि जैसे ही आपने blood drop लिया slide पे, you have to make the smear immediately. Okay. Now, so this was all about the peripheral smear. How to make a peripheral blood smear. Okay. This is the main images you need to keep in your mind. Tail and body head. This is the ideal smear. What we do not want. And the characteristics, so that what we keep in mind for a good smear, so that the ideal thickness smear is formed. Now, as I said, we need to make a peripheral blood smear. Now, for performing a differential leukocyte count, we need to stain that blood smear. हमने एक smear पे red color का smear बना रही है जो कि हमारी blood से बना हुआ है. Okay. Now we need to stain that smear. So for slide fixation and staining, materials required are: number 1, Leishman stain, which is the stain for DLC. Okay. The name of the stain used for DLC is Leishman stain. Number 2, distilled water. Number 3, slide holder or a rack. These are 2 parallel glass rods. Slide holder is 2 parallel glass rods fitted in such a way कि उसके ऊपर आप एक flat slide place कर सकते हो horizontally. Okay. 2 parallel glass rods fixed at a distance so that आप जो slides हैं उस पे horizontally place कर सकते हैं. Okay. So first of all, what is a Leishman stain? Now, please remember this word. Leishman stain belongs to the Romanowsky group of stains. The pronunciation is Romanowsky. Romanowsky. It belongs to Romanowsky group of stains. Now, what are Romanowsky group of stains? These are a group of stains which have both acidic and a basic dye. Romanowsky group of stains ऐसे stains होते हैं जिसमें 2 dyes होती हैं, एक acidic होती है और एक basic होती है. So one of the examples, as I said, is Leishman stain. Another examples are Giemsa stain and Wright stain. Details में नहीं जाना, सिर्फ नाम पता होने चाहिए. And Leishman stain इतना पता होना चाहिए कि it belongs to Romanowsky group of stains. Now, what is the composition of Leishman stain? As I said, क्योंकि वो Romanowsky group of stains का है, so it has a basic dye and it has an acidic dye. The basic dye in the Leishman stain is methylene blue. The acidic component is eosine, and as a fixative is acetone-free methyl alcohol. Okay. So methylene blue जो है वो basic stain है. As we know from chemistry, basic dye जो है वो acidic components को stain करेगी. Acidic dye है वो basic components को stain करेगी. ठीक है. So since methylene blue is a basic stain, it stains the acidic components of cytoplasm, nuclei and basophils के granules. क्योंकि basophils के granules are acidic in nature. Okay. Similarly, second dye is eosine. It will stain, since it is acidic, so it will stain the basic components, that is RBCs and granules of eosinophils. Eosinophil के granules are basic in nature. Since they are basic in nature, so they will be stained by a pink eosine dye, that is acidic. Methylene blue is blue in color. Eosine is magenta pink in color. Okay.
सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बेसिक कंपोनेंट है उसके हिसाब से वो लाइट पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा पिंक उसके हिसाब से स्टेन हो जाता है. ऑलराइट. The third component in the Leishman stain is acetone-free methyl alcohol, which acts as a fixative. Now, what do you mean by a fixative? Fixative means that it preserves the cells in the chemical and metabolic state. हमने blood draw किया हुआ ना अपनी body से, so blood draw करके, so, if it would not have any kind of a fixative, what would happen is the blood will clot, है ना? Clot तो होगा ही होगा, and secondly, अगर उसमें fixative नहीं होगा, so it will crenate, mechanical damage हो जाएगा या खराब हो जाएंगे. We need to have such a dye जिसमें कि कुछ ऐसा preservative types की चीज हो which arrests the cells in their very own metabolic and chemical state, है ना? So the fixative preserves the cells in their chemical and metabolic state whatsoever. It also fixes the smear. जो हमने blood smear बनाया उसको slide से भी तो चिपकाना है. हमने glass slide के ऊपर एक smear बनाया ना. So this smear has to be, you know, glued to the slide. चिपकाना है. कैसे चिपकता है? It acts by precipitation of proteins by the alcohol. The take-home message is Leishman stain is a Romanowsky group of stains which has a both acidic and a basic dye. Acidic dye जो होती है वो basic components को stain करती है. Basic dye जो होती है वो acidic components को stain करती है. As I said, methylene blue is the basic dye, blue in color, so it will stain the acidic components. Eosine is acidic dye, so it will stain the basic components as given below. ठीक है? The third component is acetone-free methyl alcohol. Methyl alcohol जिसमें acetone ना हो, it acts as a fixative. Now, what are the functions of a fixative? Number one, it preserves the cells in chemical and metabolic state in whatsoever state they are. Number two, it fixes the smear. जो आपने blood ऊपर अपनी glass slide के लिया है और आपने उसको spread किया है, it fixes that blood smear onto that very glass slide. How? जो blood के अंदर plasma proteins हैं, जो blood के अंदर proteins हैं, they precipitate the proteins with the help of methyl alcohol onto the glass slide. ठीक है? कैसे चिपकता है? Blood slide से कैसे चिपकेगा? By precipitation of proteins with the help of alcohol. जो proteins होते हैं, they precipitate onto the glass slide. ठीक है? Such that the smear is glued to the slide. The smear is fixed to the slide. Now, coming on to the procedure. अब हमने क्या किया? हमने पेरिफेरल स्मेयर बना लिया. हमने स्टेनिंग वाले मटेरियल्स देख लिए कि लीशमैन स्टेन एक चाहिए हमें और डिस्टिल्ड वाटर का रोल अभी आएगा. Now what exactly is the procedure? As I've written over here, the staining time is 2 + 9 minutes. I'll just read the procedure very slowly. Please read it very carefully. It is very difficult to demonstrate online. So what I would request you all is just bear with me. मैं बहुत आराम से पढ़ूंगी, giving you the important points. Please go through the practical today itself. Peripheral blood smear और DLC का practical आपकी सब practical books में दिया हुआ है. Dr. Varshney की भी and Dr. A.K. Jain की भी. Please go through this practical once. It is very easy to understand. एक बार जब आप खुद ध्यान से पढ़ोगे. Okay. हमने यहाँ पे smear बना लिया था, right? We made a smear rub. Step number 1. हमने एक smear बनाया क्योंकि हमें DLC perform करना है तो उसके लिए हमें एक smear की जरूरत है. Now, जब हमने स्मेयर बनाया तो ब्लड गीला होगा ना. ब्लड विल बी गीला फॉर सम फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स. ऑलराइट. बिफोर यू स्टार्ट स्टेनिंग with this Leishman stain, before you start staining the smear with the Leishman stain, make sure that the blood smear has completely dried up on the slide. ब्लड स्मेयर जो गीला गीला होगा कुछ मिनट्स के लिए आपको उसको ऐसे ही एयर ड्राई करना पड़ता है, so as to allow the proper fixation of the smear, ताकि प्लाज्मा प्रोटीन्स अच्छे से प्रेसिपिटेट होके फिक्स हो जाए. नंबर 1. नंबर 2, so that the smear is dried completely. अगर मैं गीले ब्लड पे ही स्टेनिंग शुरू कर दूंगी तो वो गीला ब्लड वॉश अवे हो जाएगा ना. एक और लिक्विड अगर मैं ऊपर से डालूंगी तो वी डू नॉट वांट दैट. सो प्लीज मेक श्योर दैट द स्मेयर इज एयर ड्राइड. एयर ड्राइड एज इन कि या तो सिंपली छोड़ दीजिए आप टेबल पे सो दैट इट एयर ड्राइज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, या स्विच ऑन द फैन स्विच ऑन कर लीजिए, सीलिंग फैन, and it will dry quicker. Okay, so as I यहाँ पे देखो, the first point very much written is place the air dried smear. Place the air dried smear across the staining rack. What was the staining rack? It is 2 parallel glass rods. इस तरह से एक staining rack होता है बेटा. ये एक parallel glass rod है और उसके parallel में एक दूसरी parallel glass rod होती है. इसको किसी चीज से ना हम ऐसे fit कर देते हैं दोनों को एक distance पे. Now the glass slide can be put up on this rack ऐसे horizontally. Imagine this rack horizontally placed onto a table.
ठीक है, ऑन टू अ वॉश बेसिन, और उसके ऊपर हमने ये रैक टिकाया और उसके ऊपर हमने ये ग्लास स्लाइड्स रख दिए हॉरिजॉन्टली. So this is what it says, that place the air dried smear across the staining rack. Then pour the drops of Leishman stain so as to cover the entire blood smear. जब आपका ये स्मेयर बना था ये, सो आपने लीशमैन स्टेन कितना डालना है? लीशमैन स्टेन एक ड्रॉपर में होता है बेटा, एक ड्रॉपर बॉटल में होता है, सो इट विल कम ड्रॉप बाय ड्रॉप. सो pour the Leishman stain such that the whole smear is covered up with that Leishman stain. Okay, so pour the drops of Leishman stain so as to cover the entire blood smear. Once you have poured the Leishman stain over the blood smear, start your timer for 2 minutes. Start your timer for 2 minutes and allow it to stand for 2 minutes. आपने एक ग्लास स्लाइड लिया जिसपे एक स्मेयर बना हुआ है, ठीक है, एक स्मेयर बना हुआ है. You have air dried the smear, number 1. Once it has air dried, you have started pouring in Leishman stain such that the whole smear area gets covered with Leishman stain. जब आपने पूरा एरिया लीशमैन स्टेन से कवर कर दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के, इतना कि पूरा स्मेयर कवर हो जाए स्टेन से, you start your timer for 2 minutes. During those 2 minutes, you just keep this slide as it is. आप उसको छेड़ोगे नहीं, just allow it to stand for 2 minutes. In 2 मिनट में what would happen is, कुछ जो ब्लड स्मेयर होगा वो absorb करेगा ना लीशमैन स्टेन को. So in case it does so, in case you feel like the stain has started drying up over the smear, मतलब ऊपर गीला गीला स्टेन नहीं दिख रहा है, लीशमैन स्टेन ऊपर गीला गीला फिल्म नहीं दिख रहा है, so you can pour in more of the drops of Leishman stain. Okay, अगर आपको लगे कि Leishman stain ब्लड स्मेयर के डालने के बाद the smear appears dry, कि ऊपर जो फिल्म आपने एक बनाई Leishman stain की वो absorb हो गई है या ऊपर एक यूनिफॉर्म फिल्म नहीं दिख रही है, you can pour in more of the Leishman stain during these 2 minutes. Most importantly, do not blow air during these 2 minutes. आपको अपने फैंस को स्विच ऑफ करना है इन 2 मिनट के लिए, और अपने माउथ से भी स्लाइड के ऊपर कोई एयर ब्लो नहीं करनी है. The role of air will come later on. I'll tell you why I have written this precaution here. This is one of the most important precautions. Do not blow air when you have kept the slide for 2 minutes just pouring in the Leishman stain. इसका रीजन ये है बेटा, हमने मिथाइल अल्कोहल डाला हुआ ना इसमें, ठीक है. So what would happen is, if you start blowing the air in with your mouth or start up the electric fan, this methanol will start evaporating. Alcohol है ना, it will start vaporizing. तो जो stain है ना वो precipitate होने लग जाता है. Stain precipitate होके ऐसे बिल्कुल इकट्ठा गंदा सा हो जाएगा and it will precipitate onto the slide. So rather than कि वो cells को stain करे, उसकी जगह it will precipitate powdery form में. Okay, so we do not want that. To make sure, the most important precaution, do not allow the stain to dry up. अगर ऐसा लगता है तो pour in more drops of Leishman stain. Number 2, do not blow air during these 2 minutes, else the methanol will evaporate and the Leishman stain will precipitate onto the slide. Now what are these 2 minutes for? These 2 minutes are for the fixation time. Fixation time किसका? ये जो methyl alcohol जो fixative था, which will preserve the cells in chemical and metabolic state and will fix the smear nicely to the slide. ठीक है? So the fixation time is the initial 2 minutes of staining process with only Leishman stain. What is fixation time? It is the initial 2 minutes of staining only with the Leishman stain. What happens in these 2 minutes is, number 1, the smear gets fixed to the slide. Number 2, the metabolic activities in the cells are arrested. What I said here, जो methyl alcohol का function है. So basically, initial 2 minutes में you're allowing the slide to be fixated. वाइवा में बहुत कॉमनली पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्सेशन टाइम एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेनिंग टाइम. सो अभी हमने बात की सिर्फ फिक्सेशन टाइम की. ओके, आपने एयर ड्राइड स्मेयर रखा, उस पे लीशमैन स्टेन डाला. लीशमैन स्टेन डालने के बाद यू अलाउड द स्लाइड टू बी केप्ट एज इट इज फॉर 2 minutes. ड्यूरिंग दीज 2 minutes, व्हाट यू सी इज द फिक्सेशन टाइम, which will fix the smear to the slide and the metabolic activities will be arrested. After 2 minutes, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने इधर लिखा pour the drops of Leishman stain. आपने जितनी ड्रॉप्स डाले ना बेटा, चाहे पहले या बीच में, ड्यूरिंग these 2 minutes, count those drops of Leishman stain. ओके, सपोजिटली मैंने 16 ड्रॉप्स डाले. सपोजिटली ये स्मेयर था और मैंने इस पे 16 ड्रॉप्स ऑफ Leishman stain डाले. एज आई सेड, Leishman stain एक ड्रॉपर बॉटल में होता है, सो इट कम्स आउट ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली. Once this film is completely covered, number 1, तो
तो आपको सपोजिटली 16 ड्रॉप्स लगे इसमें लीशन स्टेन के, ठीक है। और सपोजिटली एज आई सेड कि मान लो मुझे लग रहा है कि स्टेन बीच में ड्राई अप हो रहा है, मैंने 4 ड्रॉप्स और डाल दिए बीच में ड्यूरिंग दोस 2 minutes. So the total number of drops of leishman stain is 20. Okay, so what it says is after 2 minutes double the number of drops of distilled water on the slide are put up. That is, अगर 20 leishman stain के drops से तो distilled water के 40 drops डालने हैं over that smear. Okay, with the help of a dropper you will count 40 drops and pour it over the smear. Okay. It has to be taken care of that while you pour up the distilled water, it should not flow down. Slide के ऊपर ही रहना चाहिए सब कुछ, वो रहता है. It is difficult to imagine कि इतना सारा liquid हम एक slide पे डाल रहे हैं और वो सारा का सारा वहीं पे contained रहता है. It does, क्योंकि smear उसको सारा पकड़ के रखता है. So do not allow this. जो ये 40 drops हैं, make sure that they're over the slide and do not overflow into the basin. Okay, they have to be there on the slide itself. Thereafter you need to blow the air gently. Blow the air gently. वहां मैंने क्या बोला था कि during these 2 minutes do not blow the air. After 2 minutes, once you have put the distilled water onto the slide, blow the air gently either from your mouth, blow the air gently either from your mouth or with the help of an empty dropper. अगर आपको एक ड्रॉपर दे दिया जाए और उसको पीछे से पुश करने के लिए होता है ना ड्रॉपर के, so if you push this up and down, बार बार पुश करोगे तो इसमें से सिर्फ हवा ही निकलेगी ना, अगर कोई लिक्विड नहीं है. So blow the air gently either from your mouth over the smear, over the slide, or blow the air gently through the help of a dropper, such that you ensure a proper mixing of stain with distilled water. हमने किया क्या है? See, we have 3 liquids out here. एक तो blood smear जो कि blood है, उसके ऊपर हमने डाल दिया था leishman stain, वो भी एक liquid है. अब उसके ऊपर से हम distilled water डाल रहे हैं. So all these 3 liquids have to be amalgamed together ना, इनका mixture एक अच्छा सा तैयार होना चाहिए. So we blow the air once we put in the distilled water so as कि distilled water leishman stain के साथ अच्छे से mix हो जाए यहाँ पे. Okay, we blow the air so as to ensure the proper mixing of leishman stain with distilled water. How do we make sure? हमें कैसे पता चलता है कि हमारा smear ठीक बन रहा है? जब आप distilled water डालोगे और air को blow करोगे ना, एक metallic greenish scum सा दिखेगा बेटा. A thin film of greenish metallic scum will be visible to your naked eye. Okay, आप अपनी आंख से उस film के ऊपर एक greenish metallic सा scum जगह जगह देखोगे. This will tell you that your concentration of stain and the distilled water is more or less good enough to have an ideal smear for us. Okay. Now you continue blowing this air time and again for another 9 minutes. So that is why staining time was 2 plus 9 minutes. Okay. So now what is the staining time? Staining time is those last 9 minutes of staining process after adding distilled water. Number 1, आपने leishman stain डाला, leishman stain डालने के बाद 2 मिनट वेट किया, फिर आपने distilled water डाला, distilled water डालने के बाद आपने 9 minutes वेट किया. leishman stain डालने के बाद जो शुरू के 2 minutes थे, that was fixation time. Distilled water डालने के बाद जब आपने stopwatch में 9 minutes डाले, that was your staining time. Now what happens in the staining time is this distilled water ionizes the leishman stain so that it can penetrate the cells and stain their components. The simple thing is, ये smear है, इस पे imagine supposedly उसमें blood smear पे cells है ना, WBCs, RBCs सारे के सारे हैं, ठीक है. Fixation time पे आप क्या कर रहे हो? Fixation time पे you're arresting these cells की metabolic activity and fixing them onto the slide. आपने leishman stain तो इस टाइम पे डाला हुआ है 2 minutes में, but leishman stain में जो उसकी acidic और basic dye है ना, it has not penetrated the cell yet. Initial 2 minutes में this cell has only been glued to the glass slide. leishman stain इसके ऊपर ही पड़ा है, अभी अंदर नहीं गया है. It cannot penetrate the cells. Whereas जो बाकी के 9 मिनट हैं, उसमें क्या हुआ कि ये जो सेल हैं, ये जो सारे स्मेयर पे ब्लड सेल्स हैं, अभी तक leishman stain ऊपर ही पड़ा था ना, it cannot penetrate the cell. Distilled water क्या करता है? It ionizes this leishman stain. It ionizes the leishman stain जो कि सेल के ऊपर पड़ा है. We always know from physiology की knowledge से that ionized things only penetrate the cell. Cell membrane को ionized चीजें ही penetrate कर पाएंगी. So distilled water ionizes this leishman stain and then allows it to penetrate inside the cell. अब जब leishman stain अंदर penetrate कर गया, so depending upon the acidic component or the basic component of the cell,
it will be stained by the methylene blue dye or the eosine dye. I hope I am clear till this now. फिक्सेशन टाइम में सिर्फ एक स्मेयर पड़ा था जिसमें कि हमने एक ब्लड स्मेयर बनाया फुल ऑफ सेल्स. ऑब्वियसली आरबीसीज भी हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, सब कुछ है. आई एम टेलिंग यू कि जब आपने इनिशियल 2 मिनट में लीशमैन स्टेन डाला, लीशमैन स्टेन इज जस्ट ओवर द सेल्स, इट हैजंट पेनिट्रेटेड द सेल्स येट. लेकिन जब आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला, सो जो लीशमैन स्टेन बाहर पड़ा है, इट आयोनाइजेस with the help of distilled water, and since it has ionized, now it is able to penetrate the membranes of different blood cells. Now it is able to penetrate the membranes of different blood cells, and depending upon कि cell के अंदर कौन सा acidic component है और कौन सा basic component है, दो dyes थी ना लीशमैन स्टेन में, methylene blue and eosine. So depending upon the different components of the cell takes different colors. कुछ components blue color लेंगे, कुछ components pink color लेंगे. Okay, depending upon how much acidic they are or depending upon how much basic they are. All right. Okay, please guys, staining time और fixation time पूछते हैं. Do not forget that you do not allow the stain to dry up. Do not blow air in the initial 2 minutes. You blow air continuously for a 30 seconds का pause कुछ ले सकते, but you need to blow the air gently and continuously for good 9 minutes. Now after 9 minutes, अब ये तो सारा कुछ हो गया, अभी तो स्टेन स्लाइड के ऊपर ही पड़ा. After 9 minutes, जितना भी सारा स्लाइड के ऊपर मिक्सचर पड़ा था लिक्विड का, you just tilt the slide and pour everything into the wash basin. Okay, pour the stain or water mix into the wash basin and wash the slide under running tap water over your thumb. हमने जितना भी स्लाइड पे कंटेंट था उसको सारा वॉश बेसिन में डाल दिया टिल्ट करके. Whatever we are left with, tap water को ऑन करना है in a very thin stream, and putting the hand over the edge of the slide. Allow the tap water to run through your thumb onto the glass slide. Directly tap water को सीधा स्लाइड को tap water के नीचे नहीं कर देते, नहीं तो tap water की धार से the smear will wash away, निकल जाएगा ग्लास स्लाइड से. ठीक है, तो the tap water has to be run over the slide such that आप अपना स्लाइड के एक एज पे, बॉडी एंड खाली था ना, बॉडी एंड खाली था, हमने स्मेयर यहाँ बनाया तो ये हमारे पकड़ने के लिए जगह हो सकती है ना पूरी स्लाइड को. सो होल्ड द एज, बॉडी एंड ऑफ द स्लाइड विद योर थंब. ओके, बॉडी एंड को स्लाइड को थंब से पकड़ना है. अलाउ द टैप वाटर टू रन ओवर योर थंब एंड thereby onto the glass slide जो आपने बनाया इसमें, such that as I said the water should not fall directly over the smear. Washing कितना करना है, ये जितना भी सारा सामान था ना, this will appear as blue purple in color. Once you wash everything, the smear will turn pinkish in color, something like this. ये purple color है, the slide is not washed nicely. Pinkish color something जैसा आएगा ना, this is more or less the ideal smear जैसा आपको दिखेगा, pinkish सा दिखेगा. Okay, this is not the correct color, more or less smear ऐसा दिखेगा pink color का after you have washed the slide. Okay, so after you have washed the slide, it will appear pinkish in color. क्योंकि स्लाइड गीली है, so wipe the back side of the slide. जिस तरफ में स्मेयर है वो नहीं, जिस तरफ पे स्मेयर नहीं है, wash the back of the slide with dry cotton. Okay, and keep the slide in a slanting position such that it air dries. Again, जब आपने पूरा स्मेयर बना लिया, उसको वॉश कर दिया, now your smear is ready for counting the cells. Okay, so now your smear is ready for counting the cells. तो जितना आपने बनाया है उसको एयर ड्राई करने के लिए आप स्लैंट करके रख देंगे. Now this differential leukocyte count is a kind of vital staining. It is a term which is different from a term called as supravital staining. Vital staining means कि आपने cells को बाहर निकाल लिया बॉडी से and you have arrested them in that metabolic state. For example, in DLC. Supravital staining में क्या हो रहा है? You are providing that you are taking the cells out, ठीक है, but you providing the cells जो भी अपने blood है उसको in vivo वाली conditions provide किए हैं. For example, 37 degree temperature भी provide किया हुआ है बाहर water में, and so on and so forth.
This supravital versus vital staining will be more clearer to you in a chapter called as reticulocyte count. आज जब आप DLC पढ़ोगे, प्लीज मेक श्योर रेटिकुलोसाइट काउंट एक प्रैक्टिकल है आपकी बुक्स में, अच्छे से एक बार वाइटल और सुप्रावाइटल स्टेनिंग के डिफरेंसेस जरूर पढ़ लेना. The thing to be remembered is that DLC is a vital staining and it is not supravital staining. Supravital staining is seen in case of reticulocyte count. Just remember this. Vital staining is in vitro. Supravital में हम cells को as it is metabolic conditions provide करते हैं, जैसे कि living body में हो, 37 degree temperature, 37 degree Celsius temperature, and many other things. Okay, so supravital staining is used for reticulocyte count, while DLC is a vital staining. Now, once we have made the smear and allow it to air dry, आपको कुछ grossly ऊपर visible होगा ना, something like this, जो कि naked eye से दिख रहा है. This is our peripheral smear, पूरा का पूरा. So आप इसको कैसे देखते हो? एक तो naked eye से, macroscopically, that is from your naked eye, the color of the stained smear should be pink to purplish, pinkish purple होगा, something like this. This is pinkish purple. This one. This is pinkish purple, ठीक है? So this is appeared to you once you have air dried your smear बनाने के बाद. So naked eye से macroscopically the smear will be pinkish to purplish in color. Okay? Microscopically जब आपने एक बार ये देख लिया कि हाँ यार ठीक सा लग रहा है, आप इसको माइक्रोस्कोप पे लगाओगे, obviously starting with 10x. 10x पे जब आप फोकस करोगे, you will find ideal smear. कैसे बोलोगे कि ठीक ठाक smear stained है? You will find single sheet of RBCs spread against a white background with at least 1 to 2 WBCs present per field. अगर 10x पे एक ये field है, तो you will find numerous RBCs but spread together as a single sheet. एक के ऊपर एक overlapping नहीं होंगे. Okay? Against the white background, such that, और इन सब के बीच में कम से कम per field, अगर एक 10x की field है, तो उसमें कम से कम 1 से 2 WBCs दिखाई देंगे, which will be purplish to pink in color. RBCs are red in color. RBCs appear red to pink in color, reddish in color more or less, and WBCs will be seen as purplish or pinkish in color. So microscopically, what is a well-stained peripheral blood smear? Wherein you find a single sheet of RBCs spread against a white background with at least 1 to 2 WBCs present per field. अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि यार 10x पे देखने में ना सब कुछ पर्पल दिख रहा है, what you need to do is you go back to the tap water again और फिर से कुछ सेकेंड्स के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा के लिए फिर से वॉश कर लो स्लाइड को. ठीक है? अगर अंडरस्टेन स्लाइड है, सो दिस इज ओवरस्टेनिंग. अगर आपको स्लाइड के अंदर 10x से सब पर्पल दिख रहा है, दैट मींस द स्लाइड हैज बीन ओवरस्टेन्ड. सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, गो बैक टू द टैप वाटर और 1-2 मिनट के लिए और वॉश कर लो. द कलर विल बी नॉर्मलाइज्ड. दिस इज ओवरस्टेनिंग को अवॉइड. अंडरस्टेनिंग मींस कि या तो आपने स्मेयर इतना थिन बनाया था कि वो प्रॉपर्ली स्टेन ही नहीं पकड़ पाया, या आपने ज्यादा वॉश कर दिया. So this needs to be discarded. Understained smear का आप normally कुछ कर नहीं सकते हो, वो दोबारा से smear बनाना पड़ेगा. But yes, overstained smear का what you can do is you can try washing it again for another 1 to 2 minutes. So maybe it attains that pink purple color and you'll be able to appreciate the characteristics whatsoever जो हमने microscopically देखने हैं. So macroscopic view is the quality of the smear. Quality of the smear मतलब as I said कि striations ना हो, vacuoles ना हो और pink purple in color हो. Okay. Now, microscopic analysis begins on 10x to assess the quality of the preparation. It assesses whether RBCs are agglutinated, मतलब एक के ऊपर एक तो नहीं है या खराब तो नहीं हो रहे हैं, excessive rouleau formation या platelet aggregation. Assess the number, distribution and staining of leukocytes. As I said, number कम से कम 10x पे at least 1 से 2 तो visible होंगे minimum. Distribution and staining मतलब कि कुछ purple pink हर एक सेल में एक acidic और basic component होगा ना, so by default every WBC will have both pink and purple characteristics. Okay, you just need to scan your slide. Then find an area on the smear. Find an area on the smear where the red cells are evenly distributed and are not distorted. Single layer RBCs, बिल्कुल round, homogeneous against a white background with WBCs. You need to find a smear area on the smear जिसमें ऐसा कुछ मिले हमें. On high power you can ignore. आप सीधा 10x पे करके 10x पे इवेल्युएट करके आप सीधा 100x 40x पे ऑब्वियसली मूव ओवर करना जरूर है, सो एज टू ऑब्टेन अ WBC एस्टिमेट. एक रफली आइडिया लग जाएगी कि WBCs आइडिया लगता नहीं है, जस्ट थियोरेटिकल, बट ऑब्वियसली नीड टू गो टू 10x देन 40x एंड देन फाइनली टू 100x. DLC का सारा काम 100x पे होता है गाइस. ओके, DLC का सारा काम इज ऑन 100x.
So for the detailed analysis of the cellular elements, we use high power, that is oil immersion lens. It's not high power, wrongly given. Detailed cellular analysis is taken care of on oil immersion lens, that is 100x. So you put a drop of oil on the smear. Remember 100x में हमें oil का drop लेना पड़ता है. So put a drop of oil on the smear, touch the 100x का lens onto that drop, and zigzag way में वो automatically scatter हो जाएगा slide उस पे, slide पे. What you see microscopically at 100x is this. As I said, these are the RBCs. ये सारे RBCs हैं. See, appreciate slightly central pallor भी है. देखो, बीच में थोड़ी सी खाली जगह है ना. So on DLC at 100x, जब आपने smear बना लिया, what you would be able to appreciate is single layer of RBCs. मतलब RBCs एक दूसरे के overlap नहीं कर रहे हैं, with at least 1 to 2 WBCs. This is a WBC, purple pink in color, ठीक है? So single layer of RBCs with at least 1 WBC. This is how you see कि ठीक है, this is a good smear. See, this is a normal peripheral smear again. RBCs, ये सारे RBCs हैं, scattered in a single sheet against a white background, and at least 1 to 2 WBCs. See, okay? हमारा ज्यादा काम है नहीं है, अब तो सारा images का काम है. I'll just go quickly. As I said, ये पूरा smear था. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे मिलेगा? So we need to scan an area. Normally I said कि tail पे बहुत thin होता है, head पे बहुत crowded होता है. Tail पे कुछ picture ऐसी आएगी, because the blood will be very scanty in amount, तो कुछ ऐसी RBCs फैले दिखेंगे. और head end पे देखोगे तो head end पे इतने ज्यादा इकट्ठे मिलेंगे that you won't be able to appreciate anything. So the ideal area is the junction of the body with the tail, जिस पे कि आपको ideal film ऐसी मिलेगी, somewhat like this. So इसको मैंने green arrow इसलिए दिया है because this is an ideal area. See, this is an ideal area at the junction of the tail and the body. Ideally, this is the ideal area जहां पे आप DLC के लिए scan कर सकते हो, ठीक है? See, areas too thin to examine the slide. This is the tail area, this one. See, सारी जगह खाली है ना, ये already इसमें cells ही नहीं है. And area too thick, that is the head end or the body end. ये वाला head or the body end. यहाँ पे the cells will look like this. कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पे सब कुछ बहुत crowded होता है. Once you see it actually offline, in case you get to, I hope. So now what are the uses of DLC? हम क्यों कर रहे हैं peripheral blood smear? Firstly, RBCs दिख रहे हैं ना इधर, इतने सारे RBCs दिख रहे हैं. See, so for RBCs we can assess the size, the shape, the color, the arrangement, or any inclusions. For WBCs we can perform the differential leukocyte count, and we can appreciate any abnormal WBCs if present. Platelets, कोई abnormality है या एक roughly evaluation जरूर मिल सकता है बेटा. As I said in the beginning, to see if any parasites are there. RBC के अंदर कुछ parasites हैं तो वो भी visible हो जाते हैं DLC पे, peripheral blood smear पे. Now we know blood cells are monocytes, lymphocytes, which are agranulocytes. Granulocytes are neutrophils, eosinophils, and basophils. Apart from these, RBC की series and platelets की series. Okay, and macrophage is a modified monocyte. So these are the blood cells we are looking for to perform a differential leukocyte count. Mind it, it is a differential leukocyte count. So no we are concerned with counting RBCs or platelets. हमें RBC platelets count नहीं करने होते हैं, हमें सिर्फ WBCs count करने होते हैं, which are these 5: monocyte, lymphocyte, neutrophil, eosinophil, basophil. Okay, see, ये जो छोटी अच्छा अब दिखते कैसे हैं, जो बिल्कुल सबसे छोटी होती हैं, purple dots. Imagine और अगर कहीं पे purple dots होंगी, something like this. These are the platelets. As I said, these are the RBCs. और जितने भी ये सारी purple colored cells हैं बड़े, all these are WBCs. Okay, all these are WBCs. I think I should stop here as of now. It is a long practical. Do you guys mind? हम ना फिर कभी आधा घंटा सिर्फ, it's half an hour more briefing के लिए. So it's better I should take up your doubts till here अभी तक. And identification exactly WBC से कौन से कैसे दिखते हैं वो मैं दोबारा बताऊंगी in another half an hour class. Maybe I'll schedule today evening itself. Okay. So I'm good to go with your doubts. Please unmute yourself or WhatsApp me. जो भी doubts हैं बेटा अभी तक पूछ लो. It's 11 o'clock. What I'm saying is कि अभी तक we learned about peripheral blood smear. We learned about how to make a slide for DLC. Now exactly अब इन WBCs को identify कैसे करना है,
I'll tell you in the next class for another half an hour. जो आज शाम को मैं देखती हूँ schedule कर लूंगी. We are hardly left with anything, but I would not fast forward it because समझ नहीं आएगा. So please unmute yourself and let me know your doubts or WhatsApp me. And I request you all, please make sure जो भी मुश्किल से आधा घंटा और लगेगा मुझे, जो भी आधे घंटे की और क्लास होगी, do attend that. जो basic crux है वो अभी आधा घंटे में, नेक्स्ट आधे घंटे में बताऊंगी आराम से, because it's already too much for you. Ideally it should have been 2 different practicals, एक peripheral blood smear का और एक DLC का, but for reasons unknown it has been combined together. So since it has been combined, I do not want कि हम जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ लें. आज अभी सिर्फ इतना समझो. Whatever time suits you today or next or whenever, Gauri or Sukhman can inform me कौन सा time suit करता है. So we can schedule another half an hour class जिसमें कि identify करना बताऊंगी, क्योंकि unavoidably microscope में spotting में आता है. You have to identify how to identify lymphocyte, how to identify a neutrophil, so on and so forth. So please, it's an earnest request. Do not miss another half an hour की class जो मैं schedule करूँगी. Okay, we are still not over it. Another important part is still left behind. Okay, ma'am, will we need to watch the slides before practical? Yes, beta, we do. Slides ko before you start with your practical, do wash your slides with soap and water so that जो उसपे oil and grease है, that gets washed away. Okay, यहाँ equal number of drops आएगा नहीं, ये गलत दिया हुआ है. It is not equal number of drops. Please make sure it is double the number of drops. 200%. It is double the number of drops. Please make a correction. Okay, ma'am, in the book it's given that under 10x WBCs can't be differentiated, and under 40x 1 to 2 WBCs are seen. बेटा ऐसा नहीं है. जब आप live अपना देखते हो ना इसमें, see, RBCs will appear as red in color. 10x पे obviously बड़ा field दिखता है ना, ज्यादा field दिखता है, लेकिन cells बहुत छोटे छोटे दिखते हैं. लेकिन RBCs red in color दिखेंगे और WBCs का shade देख रहे हो. Can't you appreciate here? जो मैंने अभी slide इस time open की हुई है, purple pink in color होते हैं. See, ये वाला. Just a moment again. The shade of the WBCs is completely different from that of the RBCs. या तो magenta pink purple दिखेंगे या purple दिखेंगे. So on 10x भी आप appreciate easily कर सकते हो that yes, कम से कम कुछ WBCs visible हैं. Ma'am, why we don't have distilled water initially added to Leishman stain, as it will initially ionize and also the stain. नहीं. See, as I said, ultimately it's water. Leishman stain wash off ही हो जाएगा slide से. तो पहले तो मेरे को स्लाइड को फिक्स करना है, उसके बाद ही तो मैं फिर आयनाइजेशन दूंगी. इट्स अ 2-step प्रोसेस. फर्स्ट आई नीड टू फिक्स दैट स्मेयर नाइसली सो दैट कुछ भी वॉश अवे ना हो. ओनली देन आई विल आस्क द स्टेनिंग कि अच्छा ठीक है, अब सेल्स को मैं स्टेन कर सकती हूँ. सो इट कैन नॉट बी दैट साइमल्टेनियस स्टेप, बिकॉज अगर लीशमेंट्स के साथ साथ मैं डिस्टिल्ड वाटर डाल दूंगी, सिंस इट्स अ वाटर हैज इट्स ओन प्रॉपर्टीज, इट विल बाय डिफॉल्ट वॉश अवे द लीशमेंट स्टेन फ्रॉम द स्लाइड. तो वो कुछ भी फिक्स होने वाला नहीं है बेटा, और जब तक कुछ चिपका नहीं होगा आप उसको स्टेन कैसे करोगे, है ना? So it is very, very important you first fix the slide and then you stain the smear. All right? Am I clear? Abhinav? Yeah. Anything else, beta? Are you actually clear about the practical? I insist again, please do make sure कि before I take up the class, इतना कम से कम बुक से पढ़ के रख लेना. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल. जस्ट दैट कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन एंड अंडरस्टैंड. आई एम ट्राइंग हार्ड कि आपको समझ आ जाए काफी हद तक, बट यस. मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड इन द स्लाइड? ओके, फील्ड होता है बेटा कि जब मैं माइक्रोस्कोप से देख रही हूँ तो उस टाइम एक गोला दिखेगा ना मुझे. जब माइक्रोस्कोप के लेंस से देख रही हूँ तो एक गोले में जो भी नजर आ रहा है दैट इज वन फील्ड. व्हेन आई मूव माय फ्रेम, मतलब अगर ये स्लाइड है, इफ दिस इज द स्लाइड, मैं माइक्रोस्कोप को फोकस किया यहाँ पे, सो दिस गोला इज वन फील्ड. ये when I'll move my microscope and start looking here, this is the second field. Then I'll start moving my microscope here, then this will be the third field. Okay, it should be tongue shaped and taper towards end without any tail. नहीं, it has to be tongue shaped for sure. See, आपने अगर carefully notice किया हो, it is contradicting itself. How can it be tongue shaped as long as उसकी कोई tail ना हो? Tail मतलब क्या है? What they are not wanting is something like this. I'll tell you what.
सी ये जो एक्स्ट्रा पूंछ निकली हुई है ना, we do not want this. Without any tail matlab we do not want this. It has to be a perfect tongue shaped smear, edge to edge, covering 2/3 of the length and width to width. It should not have any extra edges like this. ठीक है? So इस तरह की tail को हम नहीं चाहते हैं बेटा. Okay, why is methyl alcohol acetone free? Acetone free beta, acetone precipitates all the components. So acetone हम इसमें नहीं लेते हैं. We want acetone free methyl alcohol. Methyl alcohol acts as a fixative only in the absence of acetone. Acetone की अपनी properties होती हैं, it will precipitate everything. Proteins को अगर concentration acetone की ज्यादा हो तो it precipitates all the blood proteins. We do not want that, so it has to be acetone free methyl alcohol. Okay. What is the meaning of ionization here? Ionization means कि अगर ये cell है, उसके ऊपर मैंने Leishman stain डाल रखा है. This stain is in unionized form. Ionized थोड़ी होगी कोई चीज. इसको आयनाइज करना पड़ेगा with the help of distilled water so that now it penetrates inside. Ionization मतलब H+ ion है ना. Distilled water is maximum buffering capacity किसकी होती है? Distilled water की होती है ना. H+ और OH- ions जो maximum generate कर सकता है, that is distilled water. It is a good question as in कि ma'am why cannot we use tap water? Why do we use only distilled water? Number 1, tap water में turbidities होती हैं. Number 2, जो आयनाइजेशन कैपेसिटी होती है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, बफरिंग कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करता है, वो डिस्टिल्ड वाटर जनरेट करता है बेटा. तो जितना H+ होगा उतना जल्दी ये लीशमैन स्टेन आयोनाइज हो जाएगा, उतना जल्दी लीशमैन स्टेन कैन पेनिट्रेट इनसाइड. सो दिस इज व्हाई वी यूज डिस्टिल्ड वाटर. ओके ओके, प्लीज एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ द स्प्रेडर विद स्लाइड. हाँ, सी अगर मैं 45 इधर, आई ट्राई, वेट, शॉर्ट ऑफ टाइम. या देखो, अगर स्लाइड का एंगल मैंने बोला आइडियल इज 40 to 45 डिग्रीज. ओके, अगर ये ज्यादा कम होगा, इफ द एंगल विल बी मच लेस, व्हाट वुड हैपन इज कि सारा का सारा ब्लड स्प्रेडर के ऊपर लग जाएगा, स्लाइड पे कुछ कम बचेगा, है ना. अगर एंगल बहुत ज्यादा होगा, 45 डिग्री से ऊपर होगा, प्लस होगा, तो द होल ऑफ द स्प्रेडर, जो स्मेयर के लिए मूवमेंट चाहिए ना, वो स्मूथ नहीं हो पाएगी बेटा. And again, the smear का जो blood, जितना blood amount हमें चाहिए, it will be onto the spreader. So the angle has to be such that it is neither too close to the glass slide nor too away from the glass slide. अगर आप ज्यादा ऊंचा करके डालोगे ना, कोशिश करना, pen holding position is the easiest position. अगर आप इससे ज्यादा vertical करोगे, it won't be smooth enough for you to make a good smear, that to 2/3 of length तक का. All right. Can we mix Leishman stain and distilled water differently in a test tube and then put it on a smear for ionization? Sorry. Can we mix Leishman stain and distilled water differently in a test tube and then put it on smear for ionization, then let it dry? I did not get this question, beta. The thing is, Leishman stain आप किसी test tube में लो, distilled water किसी और test tube में लो, but ultimately it has to be कि दोनों इकट्ठे नहीं डलेंगे. पहले लीशमैन स्टेन डलेगा, उसको 2 मिनट वेटिंग टाइम चाहिए, उसके बाद ही आफ्टर 2 मिनट्स ही आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना. The staining time can differ depending upon 2 + 8 minutes भी हो सकता है, 2 + 9 minutes भी हो सकता है, 2 + 10 minutes भी हो सकता है. जब भी आपको डीएलसी का प्रैक्टिकल आता है, जो भी आपका लैब अटेंडेंट होगा अंदर, टेक्नीशियन जो होगा, आपको उससे पूछना है कि भैया हमारा स्टेनिंग टाइम क्या है. फिक्सेशन टाइम फिक्स है 2 मिनट का, स्टेनिंग टाइम वो बता देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि डीएलसी का उन्होंने डाइस का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज किया है. So it can differ from 2 + 8 minutes to 2 + 10 minutes. So before, अगर आपको डीएलसी एग्जाम में आता है तो अपने लैब स्टाफ से जरूर पूछना है कि सर या मैम इसका स्टेनिंग टाइम कितना है, 9 मिनट्स है, 10 मिनट्स है या 8 मिनट्स है. मतलब 2 मिनट का फिक्सेशन टाइम तो देना ही है, बट स्टेनिंग टाइम का डिफर फ्रॉम 8 to 10 minutes. ऑलराइट, एनीथिंग एल्स बेटा? In book it is written that thickness will increase with decrease in angle. हाँ, either ways, as I said, see, मैंने क्या बोला कि आप स्मेयर को ज्यादा आगे तक बना ही नहीं पाओगे. जब ज्यादा आगे तक ट्रांजिशन दे ही नहीं पाओगे तो सारा वहीं पे स्मेयर रह जाएगा ना, तो ऑब्वियसली थिक हो जाएगा. सो द थिकनेस विल इंक्रीज. यस और नो, है ना? यही तो मैंने बोला कि आप स्मेयर ज्यादा आगे तक नहीं बना पाओगे. अगर स्मेयर ज्यादा आगे तक नहीं बना पाओगे, सो यू विल गेट अ थिक स्मेयर, आइडियल थिकनेस नहीं मिलेगी. और अगर ज्यादा कम एंगल पे बनाओगे तो द होल ऑफ द ब्लड विल बी स्प्रेडेड ऑन टू द स्प्रेडर इटसेल्फ, रादर देन ग्लास स्लाइड पे वो सारा का सारा स्प्रेडर में. अभी तो देखो, सी इधर मैं दिखा रही हूँ, सी अभी सिर्फ इसकी एज पे स्प्रेड हो रहा है ना, स्प्रेडर की ऑन द स्प्रेडर. अगर ज्यादा टिल्ट कर दोगे तो द ब्लड कैन कम अप टिल हियर
onto the spreader. We do not want that. हमें तो सारा blood slide पे चाहिए ना, इसीलिए. Anything else? I insist again, please go through the text once. Double the number of drops nahi hai. It is always and always, equal number of drops nahi hai. It is always and always double the number of drops. Okay. I think we can end our session here. Kuch bhi doubt, so I'll take it later on. Gauri or Sukhman, please let me know when can I schedule another half an hour ki class beta. Whenever suits you, let me know in the evening time or whenever, so that I can take up. And for all of you students, another half an hour session is really, really important. ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, तो कंसिडरिंग कोविड शायद ये ना भी करने को आए, लेकिन स्पॉटिंग जरूर से जरूर आती है. So you need to know how do we identify the WBCs. So I can see 230 attendance as of now, 231. Please make sure, just give me and this much of honor कि जो 230 बच्चे हैं, they do come again for half an hour session again. All right. चलो, I'll close the session now. It's already 11:10. 2 से 3 मिनट का ब्रेक लो क्योंकि अकील सर भी वेट कर रहे होंगे for your lecture. Okay. Thank you so much. And I'm expecting and hoping कि all of you join back again for another half an hour class session. Gauri and Sukhman, please do text me. कितने बजे हम रख सकते हैं? All right. Thank you. Bye. Take care. Be safe. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Bye.